Hello everyone, and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. So today we are going to learn about the Cramer's rule for 3 by 3 order matrix. As you can see, the equations here are x plus 2y plus 3z is equal to 12, x plus 6y plus 2z is equal to 13, and x plus 5y plus 3z is equal to 15. So here our target is to find the value of x, y and z using Cramer's rule, and which is also known as determinant method. Alright. Okay. So the first part of the solution is that we have to go for the representation of the given system like ax equal to b. तो हम मैट्रिक्स A जो लेते हैं वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं. So it is 1 2 3 1 6 2 1 5 3. ओके, मैट्रिक्स एक्स का मतलब जो वेरिएबल्स हैं उसको आपने एक कॉलम में लिखना है एंड इक्वल टू बी दैट इज 12 13 15. दिस इज द गिवन सिस्टम दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म. नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है क्रैमर्स रूल में, जो ये मैट्रिक्स आपने ए ली है इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट. से इट इज डी. So this is equal to 1 2 3 1 6 2 1 5 3. We have to calculate its determinant, and as you know the procedure is you have to take the alternate sign here and then 1 into 18 minus 10, cross multiplication this minus this, then minus 2, and it is 3 minus 2, and finally plus 3 5 minus 6. So we get here 8 minus 2 and minus 3. So this is 8 minus 5 which is equal to 3, not equal to 0. तो हमें पता लगा है कि जो डिटर्मिनेंट था गिवन मैट्रिक्स का दैट इज नॉन ज़ीरो. सो वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 3. एज वी नो दैट इन क्रैमर्स रूल हम एक एक कॉलम को बी से रिप्लेस करते हैं. लाइक आई एम राइटिंग हियर D1. So D1 stands the determinant of matrix A, but here we replace column 1 with 12 13 15. कॉलम B से आप इसको रिप्लेस करते हैं. So 12 13 15 2 6 5 3 2 3. Okay, so again listen, D1 stands that in the given matrix A you have to replace first column by B. So हमने column 1 की जगह B की वैल्यू डाली है and your answer will be 12 18 minus 10, then minus 2 39 minus 30, and plus 3, this is 65 minus 90. Okay, and this is equal to 12 into 8 minus 2 into 9 plus 3 into minus 25. Okay, and we obtain this is 96 minus 18 minus 75, and which is equal to, after solving you get this is 8 7 75 and 3. So D1 की वैल्यू भी हमें कितनी मिली है, 3. Similarly, on the same note, we are going to calculate D2. So D2 stands that again in the given system, matrix A में जो second column है उसको इस बार replace करना है by B. D1 का मतलब था first column को replace किया by B. D2 का मतलब है second column को. तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज लिखिए और सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया. सो 12 13 15. ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं. सो इट इज 1 इंटू 39 माइनस 30 माइनस 12 3 माइनस 2 प्लस 3 15 माइनस 13 इज 9 minus 12 and plus 6. So 15 minus 12 again 3. So D2 की वैल्यू भी हमें 3 मिली है. Then we come for D3, and what does it mean? It means that this time we have to replace third column. जो original matrix का column number 3 था इस बार उसको B से replace करना है. So what do we get here? It is 1 1 1 2 6 5. तो column 3 को replace किया. So 12 13 and 15. Let's find its determinant. So this is 90 minus 65, then minus 2, and this is 15 minus 13 plus 12. This is 5 minus 6. And what do we get here after solving? It is 25 minus 4 and minus 12.
So 25 minus 4, 21 minus 12, this is 9. So D1, D2, D3, all the values we have obtained. Now what is X? This is D1 by D, Y D2 by D and Z is D3 by D. तो जो value calculate की हैं, you can substitute here. 3 by 3, D2 was also 3, D3 was 9. So after solving we get X is 1, Y is also 1 and Z is 3. So 1, 1 and 3, this is your exact answer.